जय श्री नारायण गाइस। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। समाज में एक धारणा बनी हुई है कि रिलेशनशिप मीन सेक्स, अगर सेक्स नहीं तो रिलेशनशिप नहीं। और ये मैं लोगों को कई बार समझाती रहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। मैं समझाती हूँ तो समझ नहीं आता है। तो आज मैं जो रिएक्शन वीडियो लाई हूँ, देखिए सदगुरु जी भी उसमें यही कह रहे हैं जो मैं कहती हूँ। तो चलिए, मेरे समझाने से ना सही, सदगुरु जी के समझाने से, किसी के समझाने से तो समझ में आए, सही काम होना चाहिए बस। चलिए तो देखते हैं आज की वीडियो। So there are many reasons why one indulges in sex. For some, it is just pleasure. For some, it is a way of building this bond and companionship. Otherwise, people feel they're going away from each other. They may be just fine, but a lot of people, it is psyched in their mind that if they're not sexually involved, they're actually moving away. Not true. You can be very close to somebody and need not be involved in any physical manner, isn't it? But societies are psyching, especially in this part of the world, people are hugely psyched. If there is no sexuality, you don't really have a relationship. In fact, the word relationship… सी, वही वो भी कह रहे हैं, एग्जैक्टली। वी आर साइक्ड। एक बचपन से हम देखते हैं समाज में सब लोग यही कर रहे हैं, तो यही सही होगा। पर क्या हमने महाभारत नहीं देखी? मेजॉरिटी नहीं जीतती है कभी भी, सही जीतता है। चाहे वो अकेला अर्जुन ही था ना, फिर भी भगवान ने, नारायण ने उस अर्जुन का साथ दिया, पूरी कौरव सेना का साथ नहीं दिया कि वो मेजॉरिटी है। हम लोग मेजॉरिटी को बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, अरे मेजॉरिटी सारे ऐसे ही कर रही है, सेक्स मीन्स रिलेशनशिप, तो फिर हम भी करेंगे। ये गलत है। जब से मुगल और अंग्रेज़ आए हैं ना, 400 साल इन्होंने राज किया ना, तो वो एक इन्होंने माइंड हमारा वो कर दिया है, करप्ट कर दिया है कि हाँ, रिलेशनशिप मीन सेक्स, It took me some time to understand that here, if you say a relationship, you're supposed to understand it's sex-based relationship. Nothing else is a relationship. If I can have a very strong relationship with you and not be concerned about your body, isn't it? Yes? I may not be drawn to your body in any way, but I can have a very powerful relationship with you. But all those possibilities are completely discounted. A relationship means you must be in some way physically involved, man, woman, or man, woman, whatever you like. Essentially, it's body-based. सी एक और बात मेरे को सदगुरु जी ने ही याद करवा दी। देखिए, एक और प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं LGBT जो है या गेज जो हैं या ये जो है, इन्होंने करप्ट कर दिया सब कुछ। नो, इन्होंने करप्ट नहीं किया। चाहे वो हो, चाहे एक हेटेरोसेक्सुअल कपल हो, नॉर्मल कपल हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सेक्स है। प्रॉब्लम LGBT या नॉर्मल कपल नहीं है। अगर आप नॉर्मल कपल भी, आपको क्या लगता है, अगर शादी के बाद आप सेक्स करोगे तो क्या वो मतलब उसमें से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, या वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के विकारों में से नहीं गिना जाएगा? वो तब भी गिना जाएगा। तो ये केवल इसका उपयोग जो है वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, वो भी अगर आपके पास और कोई माध्यम नहीं है। वैसे अब तो आर्टिफिशियल अगर भाषा भी जैसे आ गया है, तो अगर वो आगे आ जाता है तो फिर उसके लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको नहीं करना है। सो बेसिकली हज़ार बातों की एक बात, मतलब ये है कि प्रॉब्लम गेज या LGBT नहीं है या हेटेरोसेक्सुअल कपल नहीं है, प्रॉब्लम है सेक्स। आपको सेक्स जो है, सेक्स बेस्ड रिलेशनशिप नहीं रखनी होती है। चाहे आप नॉर्मल कपल हो, चाहे आप गेस हो, चाहे LGBT हो, आप एक मैन टू मैन भी रख सकते हो, वुमेन टू वुमेन भी रख सकते हो, लेकिन एक पवित्र मन का रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रेम मन से होना चाहिए, शरीर से नहीं। सेक्स बेस्ड नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप। अरे आपके सामने सदगुरु भी वही कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रही हूँ, देख लीजिए, सदगुरु भी वही कह रहे हैं। What kind of body is individual choices, but essentially it is body-based. This has happened because somewhere our identification with the body has gone beyond normal levels of identity. It is excessive identification with the body. That is why body-based relationships have become the crux of the society. Essentially, most of the sexuality that's happening on the planet is happening because of a certain compulsiveness, isn't it? It's a compulsive drive. After all, now I'm speaking, this is a kind of energy. You are looking at me, this is a kind of energy. You're listening to me, this is a kind of energy. These are different expressions of the same life energy, isn't it? Now, sexuality is also another expression of the same energy. Now, one has to decide how much of his energy, in which direction he wants to send it. Because after all, you are a limited amount of energy, isn't it? See, it's just like you have an income. Let's say you have $5,000 a month. How much for the house rent? How much for eating? How much for schooling? How much just for fun? How much for vacation? Your portion, isn't it? Tomorrow morning, you got your salary, in the evening you went out and blew it up. Now the next month is going to be trouble. Everything in your life
If you're handling your life sensibly, everything in your life is apportioned according to your understanding, your need and your capability, isn't it so? Yes? Your money, time, energy, isn't everything allotted the way you like to arrange it? This is also the same thing. How much of it? First of all, do you need it? Or are you doing it because of socially you're psyched? If there is a need, if I ask you to stop it, you will become perverted because it'll all happen in your head. If somebody is telling you, you have to do it, if you don't do it, you're not normal, another kind of perversion will come. Both are not needed. It is just that if there is such a drive, it is there, but you understand the limitation of it. After all, you're not going after a man or woman, we already looked at this, you're going after a certain level of pleasantness. So once you experience a certain level of pleasantness, wouldn't you like to dig deeper into this? Because whatever pleasantness happened, maybe you used the other person, but the pleasantness happened within you, right? So suppose anyway the pleasantness is happening within you, the other person is just a key to open this, wouldn't you like to have the key in your own hands? Yes? That if you sit like this, you're on full scale. You don't need anybody, because to extract pleasure out of somebody, you have to play any number of tricks. It doesn't happen simply. This is called as courting. Once you go to the court, the judgment day will come. It takes enormous amount of time, effort, energy and all kinds of other things, frustrations, jealousies, problems, everything attached to it. You're here constantly looking, what can I get out of this person, what can I get out of that person? This is a con job. It's called a love affair but it's a con job. But if you are extremely ecstatic by yourself, when you're being with people, it's about sharing your ecstasy. It is about, if they are not touched by it, somehow to touch them with it, not just taking. rather than seeing what you can squeeze out of them. The whole fundamentals of your life will change. ये एक और बात देखो, सदगुरु ने बहुत अच्छी कही है। पता है, अगर आपको कुछ भी सत्य जानना है ना, तो आप बाहर सत्य बाहर नहीं मिलेगा, सत्य अंदर ही मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे मैं बोलूँगी ना, तो ऐसे ये सिर्फ आपके लिए वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे, या सदगुरु बोलेंगे, तो वो भी शायद हो सकता है आपको समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन कैसे करना है वो समझ में ना आए। आप आपसे नहीं हो रहा, ट्राई किया लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सो जान। मैंने भी बहुत बार ट्राई करने के बाद मैं ब्रह्मचारी बनी थी। तो कई मेरे ट्राइज असफल भी रहे, लेकिन फिर मैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सो जान फाइनली मैंने मतलब अचीव कर ही लिया। लेकिन वो अचीव कैसे किया? जब आप योग और ध्यान करना प्रारंभ करते हैं ना, तो उसकी जो शक्ति होती है ना, आप अपने अंदर से मार्गदर्शन मांगिए ईश्वर से, तो वो जो होते हैं ना, वो फिर मार्गदर्शन करते हैं ना, तो फिर जब वो करते हैं तो होगा ही, तब कैसे नहीं होगा, राइट? हम अगर करते रहेंगे तो जैसे होता है ना, बच्चा कर रहा है तो बच्चे को करना नहीं आता, लेकिन माँ बाप हाथ पकड़ के चलाएं तो फटाक से हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही आप अगर अंदर से ईश्वर से मार्गदर्शन मांगेंगे तो वो अपने आप टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आप ध्यान करना शुरू करोगे तभी तो होगा ना। अगर आप करना ही नहीं शुरू करोगे तो फिर तो नहीं कोई फ़ायदा होने वाला। सो ये भी उन्होंने बहुत अच्छा करवाया, इसीलिए मैं ध्यान करती हूँ प्रतिदिन और मार्गदर्शन मांगती हूँ। उन्होंने देखिए सही मार्गदर्शन कर ही दिया इस चीज़। सो चलिए अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। जय श्री नारायण।